so let's start. Okay, let's revise quickly what we have learned yesterday. And today, first of all, we will do some practice based on the properties, and then we will learn the last topic of this chapter, that is 4 marks. ठीक है, चलो. So एक बार quickly हम revise करें जो हमने कल पढ़ा था. So first property that we have started, that is associative property. ठीक है, and associative property सोचो किसके लिए true था? For addition and multiplication part. ठीक है, and subtraction and division satisfy करेगा नहीं. ठीक है, second हमने देखा था, that is again associative property क्या था कि हमारे पास कोई नंबर है and at a time अगर हम क्या करें, ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो दे रहे हो चेंज करेंगे. पहले मैंने फर्स्ट टू लिए, बाद में मैंने अदर टू लिए, तो आंसर में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा. So in that case what you observe, in addition and multiplication the answer is same, but subtraction and division the answer will differ, and therefore associative property holds true for multiplication and addition. Then very important property that we will learn, that is distributive property. ठीक है, एंड अभी उससे पहले एक बार याद करो एक बेसिक सा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं ऐड करूं द आंसर विल बी सेम ओनली. So yes, 0 is the correct answer. So 0 is the additive property, है ना. फिर सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करें, if we multiply the answer will be same only. So yes, correct answer is 1, है ना. 5 ones are 5 again, 11 ones are 11 only. So 1 is the multiplicative identity. ठीक है, and last property that we will learn is distributive property. And distributive, what we can do in this property कि हम प्रोडक्ट तो कर रहे हैं जहाँ पे हमारा दो नंबर ऑफ सेट्स कैसे हैं, एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो इनको विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. सो एक बार इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आज मैं पहले सॉल्व करके फुली रिवाइज हो जाएगा, एंड देन वी विल सॉल्यूशन द वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with some questions. First it is given -2 into 5 minus 3. ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक्स एकदम प्रो पे अब जाएंगे आज अपने, है ना. सो कैसे भी क्वेश्चंस आए हमें आना चाहिए, है ना. सो लेट्स ट्राई. अगेन यू कैन सी हियर इट इज मल्टीप्लिकेशन साइन and this is distributive over subtraction, है ना. सो व्हाट वी विल डू first with the first, so -2 into 5. Okay, now see the main sign here is subtraction, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे. so -2 into क्या करेंगे 3. again very important part that we need to understand कि यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया, so we don't need to put minus sign here also. Okay, just see the number, it is 3 only. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 पुट करेंगे. Okay, so -2 into 5 it will be -10, है ना. and then again you can see here same minus लिखते हैं, -2 into 6 3 it will be -6. now what we will do, there are two techniques again याद रखो. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस इट विल बी +6. नाउ दिस इज अ केस ऑफ एडिशन विद अ डिफरेंट साइन. डिफरेंट साइन जब you subtract करो 10 minus 6 it is 4, and लार्जर साइन क्या है, माइनस, तो आंसर विल बी -4. ओके, एंड व्हाट इज द सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. -10 is given, माइनस को प्लस कर दो, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 is +6, it will be +6, and again 10 minus 6 is 4, and sign of written number is minus, so our answer will be -4. Clear? Okay, so let's try few more questions. This is given -11 to -5 plus -3. Okay, this is the main bracket and this is the multiplication sign. Okay, you have 30 seconds. Try to solve this question. What will be the answer of this question? First, understand which property we will apply in this question. You can see again, yes, we will substitute distributive property.
है ना. एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? फर्स्ट विद द फर्स्ट नंबर, है ना, तो क्या हो जाएगा -11 इनटू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा. नाउ अगेन द साइन इज एडिशन, तो सेम लिखेंगे. देन सेकंड -11 इनटू क्या हो जाएगा -3. ठीक है. नाउ 11 5 मल्टीप्लिकेशन, एंड इन द मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, so it will be 55. okay, and here minus minus again plus होता है, तो 11 is 33, and if we add this number that will be 88. so our answer will be 88. clear? okay, last question. It is given 2 into 11 into 5. Is given 2 into 11 into 5. Here it is bracket sign, here is bracket sign. Now आपको बताना है क्या ये associative property जो है वो satisfy कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है. Verify whether this set of numbers satisfy the associative property or not. So again here bracket is given. So what we will do? 11 2s are, it's 22 into 5. That will be 110. Okay, and it is 2 into, first of all we multiply 11 with 5, that is 55, and our answer will be 110. So yes, we can say it satisfies the condition. And again याद कर लो, डायरेक्ट लिखना चाहिए था कि मल्टीप्लिकेशन पार्ट है, तो yes associative property क्या होगी वहाँ पे, ट्रू होगी. ठीक है. So these are the concepts. Again हम और प्रैक्टिस भी करेंगे, but let's try to solve some word problems. ठीक है. तो अभी तक हमने ऑपरेशंस देखे, प्रॉपर्टीज देखी, अब इसी को थोड़ा सा एक लेवल अप लेके जाएंगे, एंड वी विल कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. है ना, कि नंबर्स पढ़ लिया, पर सर इसको हम काम कहाँ पे आएगा, व्हाट इज द यूज, ये इंटीजर पढ़ा दिया सर आपने, बट ये माइनस प्लस हम कब लेंगे, क्या काम आएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम वर्ड प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सिचुएशन, and you will get to know how these are connected with these numbers. Okay, so let's start. Okay, so here we have example 6, and in example 6 it is given. Let's try to understand the question. देखो word problems में सबसे main चीज जो है that is something about कि जो गिवन है वो क्या है हमें समझ आना चाहिए. सो क्वेश्चन को हमें इंटरप्रेट करना है बहुत अच्छे से, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. अगर वो हमने कर लिया अच्छे से 50% काम हमारा हो जाएगा. ठीक है. सो लेट्स सी, राम इज स्टैंडिंग इन मिडिल ऑफ अ ब्रिज. ठीक है. मान लेते हैं दिस इज मिडिल ऑफ द ब्रिज पे है. ठीक है, कुछ यहाँ पे है ना, एंड राम है. ठीक है. एंड विच इज 30 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑफ अ रिवर. ओके, सो दिस इज अवर वाटर लेवल, रिवर के अंदर वाटर लेवल हो गया. एंड क्या बोला है कि अगेन दिस इज वाटर लेवल, यहाँ से क्या बोला है 30 मीटर अब कौन है, राम से. और ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है. क्लियर. नाउ अगेन इफ a 45 meter deep river is flowing under the bridge. ठीक है. नाउ दिस इज द अपर लेयर ऑफ द वाटर, सरफेस लेवल हो गया यहाँ पे. अब इससे भी पानी डेप्थ में कितना है नीचे, और 45, कितना है 45. ठीक है. सो अगेन इट इज गिवन, if a 45 meter deep river is flowing under the bridge, then find the vertical distance between the foot of Ram and the bottom of the river. So question क्या हुआ, this is your water level, यहाँ से 30 मीटर अप कौन है, राम, जो कहाँ पर है, ब्रिज पर है. एंड यहाँ से 45 मीटर डेप्थ तक क्या है हमारे पास, पानी है. So what is the question? We find the distance between, okay, at the bottom of the river and the distance where the Ram is standing on the bridge top. ठीक है. This distance we need to find. Okay. अब एक concept अपने बहुत अच्छे समझ लेते हैं कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस. तो एक चीज समझ लो कि जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, है ना, सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब आपने अगर कुछ पाथ या कुछ है वो हमेशा क्या कैलकुलेट ही होगा, भले कितना भी हो,
है ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने इतने की तरफ चला, मान लो 20 सेंटीमीटर्स, ओके। नाउ अगेन मैं टर्न बैक हुआ एंड वापस से मैं चल रहा हूँ 20 सेंटीमीटर। नाउ थिंक कि कितना है मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप क्या बोलोगे, 20 प्लस 20 दैट विल बी 40 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा तो नहीं वापस प्लेस पे मूव किया ही नहीं, आपने सर वापस ही आ गए, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो whenever there is a distance part it will always positive, ठीक है। तो हमेशा काउंटिंग होता है, क्या होता है हमेशा वो, अगर आप खड़े हो एक स्टेप चले मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, दैट विल बी प्लस, इट कैन बी एनी 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप चले तो अगेन वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो वी नीड टू ऐड एंड इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो अगेन अंडरस्टैंड करो कि अगर डायग्राम को बताऊं, दिस इज वाटर लेवल, दिस इज वाटर लेवल, ये हमारा ब्रिज था, यहाँ पे जो है वो कौन है, राम है, एंड अगेन ये जो है डेप्थ है, सबसे बॉटम पार्ट हो गया, एंड दिस इज मेन आवर सरफेस ऑफ water level. This distance is given 45 meter, this is given 30 meter, and we need to find the distance between the ram and this the total distance. This distance we need to find. So think what will be the answer, और क्या होगा जो भी मैं लॉजिक समझाया, कितना डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, तो अगेन you what we will do, this is again देखो लॉजिक तो समझो कि this is a base level, अगर ये above है तो +30, ये नीचे है तो कितना है, उसके अपोजिट तो -45, ठीक है। लेकिन आपस में कितना ये टोटल मिला के है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से सोचो कि यहाँ से मैं ऊपर गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले 45, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से यहाँ पहुँचना हो तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, अगेन 30 मीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। सो बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द राम एंड द बॉटम लेवल ऑफ द रिवर विल बी कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। एंड अगेन दिस वर्ड प्रॉब्लम, तो एकदम सिस्टमैटिक लिखना होगा हमें, यस डिस्टेंस ऑफ ब्रिज अबव वाटर लेवल इज 30, है ना, डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ द रिवर फ्रॉम द वाटर लेवल इज 45, एंड देन वी विल गेट द टोटल डिस्टेंस। एंड अगेन लास्ट के सेंटेंस में भी लिखना है कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द ब्रिज एंड द बॉटम ऑफ द रिवर सरफेस इज 75 मीटर, ठीक है। सो अगेन देखो, जितना आप विजुअलाइज कर लोगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, अगर मैं डायग्राम नहीं बनाता, सिर्फ सेंटेंस अगर समझ लेता, तो माइट बी पॉसिबल कि कुछ कंफ्यूजन हो के हम गलत भी कर सके। तो जितना हम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ड्राइंग अगर इंटरप्रेट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को, तो इतना इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, देयर विल बी लेस एरर, है ना। सो ट्राई टू ड्रॉ फिगर, ठीक है, पिक्चराइज द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सॉल्व टू गेट ऑलवेज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, सो अभी देखो डायग्राम देख के क्लिक हो जाएगा कहीं ना कहीं सर स्टेयरकेस के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है ना। यस, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन। सो अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द 4th स्टेप, ठीक है, ऑन द स्टेयरकेस, दिस इज द स्टेयरकेस। इसी को ये अगेन भूल जावे वो डायग्राम होता है, और हम क्या करते हैं, इसको इमेजिन करते हैं, और इमेजिन करके अब क्या करेंगे, ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो कितना क्लियर होगा कि यस यहाँ पे क्या था, हमारे पास ग्राउंड लेवल था, ठीक है। वहाँ से कितने स्टेप, 4, 1 2 3 4, तो कौन सा है, 4th स्टेप पे है ना। सो बेसिकली अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द 4th स्टेयरकेस, है ना, एंड शी विल गो मोर 6 मोर स्टेप्स, ठीक है। और वो 6 को जाने वाली है। तो करंट पोजीशन जो है गर्ल की वो क्या है, करंट पोजीशन जो है गर्ल की वो कौन से स्टेप पे है, तो हम क्या बोलेंगे, 4th स्टेप, ठीक है। फिर उस 4 से ऊपर गए, अब क्या बोला है, व्हिच स्टेप इज शी स्टैंडिंग एट नाउ, कब, जो 6 मोर स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वापस आई विल थिंक
अगर डायग्राम से समझो तो 4 दिस विल बी 5th 6th 7th 8th 9th और ये क्या हो जाएगा 10th हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन इसको मैं लिखना भी तो होगा, तो कैसे करोगे इसको? सो न्यू पोजीशन या 4 तो है ही हमारे पास, प्लस हम ईच स्टेप, कितने स्टेप जा रहे हैं हम लोग? एक स्टेप जा रहे हैं, और ऐसे हम लोग कितने जाने वाले हैं? 6 जाएंगे, है ना। अगेन ध्यान दो कि हमने एक स्टेप अगर बढ़ाया दैट विल बी योर 1 स्टेप। ठीक है, ऐसे अपने कितने बढ़ने वाले हैं? 6, 6 into 1 4 plus 6 कितना हो गया? विल बी 10th। अब 10th वाले स्टेयरकेस पे क्या जाओगे? पहुंच जाओगे। क्लियर? सो इट्स अ बेसिकली नंबर लाइन कॉन्सेप्ट कि आप 4 पे थे, फिर 6 आगे आप जा रहे हो, तो व्हाट विल द पोजीशन नाउ? तो हम क्या करेंगे? 4 plus 6 तो दैट विल बी 10। And again it's a word problem, so compulsory we need to write the statement also. Current position of girl is 4th. Then new position after 6 step upward it will be 4 plus after above बाद में, तो क्या करना है हमें? We need to add, है ना। So 4 plus 6 into 1 will be 10. Now she is standing at the 10th place. Clear? Now let's see what is further given the question. At which step will she be after comes by 3 step? अगर वापस से क्या बोला है? इमेजिन करो आप खुद ही ग्राउंड लेवल पे थे, 4 स्टेप्स ऊपर गए, ठीक है, फिर अगेन 6 गए, 10 पे आ गए, वापस कहाँ पे आ गए? अपने 3 स्टेप्स नीचे आ रहे। तो सिंपली क्या करेंगे इसमें? तो हम सर -3 कर देंगे। यस, तो 10 माइनस क्या कर देंगे? 3, दैट विल बी 7। अब इसी को हमें थोड़ा सा लॉजिकली लिखना होता है, ठीक है, बिकॉज वी आर लर्निंग इंटीजर। अगर अबाव है, आफ्टर वर्ड्स है, तो विल टेक द पॉजिटिव साइन, है ना, और अगर बिलो है, बिफोर है, तो विल टेक द माइनस। तो 10th पे तो है, अब पीछे जा रहे हैं, अब पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? वी विल यूज अ नेगेटिव साइन, है ना। तो नाउ यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन, है ना। तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये सारे एग्जांपल्स, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है जहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस होता है कि आगे तो चले गए बट वापस अगर पीछे आ रहे हो तो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट पार्ट? सो फॉर दैट वी नीड अ नेगेटिव नंबर। सो हाउ वी विल फाइंड? अगेन समझो कि एक स्टेप पीछे जा रहे हो, है ना, वी आर मूविंग 1 स्टेप बैक, सो इट विल बी काउंट एज -1, है ना। राइट, नंबर लाइन है हमारे पास, दिस इज 0, दिस इज 1 2, दिस इज -1 -2। अगर आप यहाँ पे हो, आगे जाओगे तो क्या करेंगे? +1 करेंगे। अगर एक बैक गए तो क्या होगा? -1 पे पहुंचेंगे। तो एक स्टेप गया तो मैं क्या करूंगा? -1 पे करूंगा। अब ऐसे में कितने स्टेप जाऊंगा? टोटल 3 स्टेप बैक जाएंगे, तो इनटू क्या करेंगे? 3 करेंगे। तो -1 into 3 it will be -3. So what we will do? 10 minus 3, the answer will be 7. So now again representation is very important again. So how we will write? A girl come down 3 steps. So this will be 3 into 10 raised to -1, that will be -3. And again new position, what will be? 10 minus 3, it will be 7. So girl will be standing on the 7th staircase. Clear यहाँ तक? Okay, let's see another example which we can relate. It is given a certain process requires the room temperature to be lowered from 30 degrees Celsius, है ना। डिग्री सेल्सियस में काम करता है टेम्परेचर, है ना, करंटली नहीं चल रहा होगा, रेनी सीजन है। तो बेसिकली इट इज गिवन कि कुछ प्रोसेस है जिसमें क्या है? रूम टेम्परेचर जो है हमें कम करना है, एंड इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड at the rate of 5 degree Celsius every hour, ठीक है। इसको मतलब समझो क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास 30 चॉकलेट्स है, एंड बोल रहा हूँ कि एवरी आफ्टर 1 आवर आप लोग क्या कर रहे हो? 5 चॉकलेट्स खा जा रहे हो, ठीक है। तो सोचो आफ्टर 1 आवर आपके पास कितनी चॉकलेट्स होगी? इट विल बी 25, देन आफ्टर अनदर 1 आवर इट विल बी 20, है ना। तो सेम लॉजिक वही है कि फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस, and it is given from the 30 degree Celsius, ठीक है, every hourly it will decrease by 5 degree Celsius, ठीक है। So again we need to find what is the room temperature after
5 hours. ठीक है, अब अगेन सोचो, खुद का एग्जांपल लो कि 30 चॉकलेट्स थी, 1 आवर में 5 हम खा जा रहे थे और 5 आवर्स तक हम खाते ही गए, है ना। 1 आवर में कितने गए 5, सेकेंड आवर में 10, थर्ड आवर में तो क्या गए 5 into 5 तो 25 चॉकलेट्स हम खा गए, कितनी बचेगी 30 minus 25 that is 5, है ना। तो जितना रियल लाइफ में कनेक्ट करेंगे तो इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सेम कॉन्सेप्ट वी नीड टू अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन आल्सो। तो ओरिजिनल इनिशियल टेंपरेचर जो हमें दिया है इट इज गिवन 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, इनिशियल टेंपरेचर इज गिवन 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेंपरेचर लोअर, टेंपरेचर lower in 5 hours. Now we need to find in 5 hours what will be the temperature, and lower it will decrease by 5 degree every hour, है ना। So basically 1 hour में कितना है 5 degree and it is for 5 hours, so it will be 25 degree. So after 5 hours the temperature will decrease by 25 degree Celsius, ठीक है। तो उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा हमें वो सोचना है ना। सो टेम्परेचर आफ्टर 5 hours, है ना। इनिशियली कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, एंड आफ्टर 5 hours तो कितना हो चुका है कम, 25 कम हो चुका है। तो एट दैट करंट आवर टेम्परेचर विल बी 5 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी आवर आंसर। So clear, and again lower with कम हुआ, that is we will use a negative part subtraction. Done? Okay. चलो बहुत ही एक अमेजिंग क्वेश्चन है, एक ट्रिक है, एक हमारे पास कुछ क्यूब है, एक स्क्वायर है हमारे पास, and we need to check whether it is a magic square or not, है ना। And what is the condition? कि we need to check each row, each column, also diagonally we need to check whether the sum is same or not. Okay, and again if it is same then we can say yes it is a magic square, and any of the condition, any of the sum is again not satisfying, then we can say it is not a magic square, ठीक है। So quickly try to solve and check whether we are getting the same number or not, and with the help of this question we will understand the importance of sign convention, where to use addition, where to use subtraction. So let's try. First you try to solve the question. Okay, so we can start with the any pattern, let's suppose I will start with the row wise. So this is our first row, this is our second row, this is our third. Okay, and we need to check whether the summation is same or not. Okay, so we will add all of this number. How we will add? This is -1. Add बोला मतलब प्लस लिखेंगे मेन साइन, then is -9 plus and this is +2. Okay, now how we will add this number? Main sign is positive. This is a case of same sign, है ना। तो -1 -9 again addition करेगा और 9 + 1 it will be 10. Now in the addition part if the signs are same तो put the same sign again, है ना। So it's a minus, तो यहाँ पे क्या करेंगे -10 and this is +4. Now again -10 + 4. This is a case of different sign. So directly subtract the number. 10 - 4 is 6. So write down the 6 here and check the sign of the larger number. It is negative. The answer will be -6. Clear? So this is our first answer of the first one. Now let's try the second. It is given 3 plus -2 plus -7. Okay, so again 3 plus -2.
this is a case of different sign. The 3 minus 2 it will be again how different sign, ये प्लस में है ये माइनस में है ना, तो डायरेक्टली क्या करेंगे डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 3 minus 2 it will be 1. Now negative or positive, to check the sign of larger number, it is positive, it will be plus 1, plus it is given minus 7. Now again addition is given and this is a case of different sign, this is positive, this is negative, so we will subtract first. 7 minus 1 is 6, check the value of larger number, sign of it is minus, it will be minus 6. So yes, till now we can see the answer of first row and second row is same. Okay, let's try for the third row. It is given minus 8 plus 5 plus minus 2. Try to solve and check whether we are getting minus 6 or not. Quickly try to solve with the proper sign convention. Remember the basics that we have learned. Let's see. Again, main sign is positive. This is a case of different minus plus, so again we will subtract. 8 minus 5 it will be 3. Now check the sign of larger number, minus 3 plus again minus 3. अब देखो वापस एडिशन है, but this is the case of same sign, same sign पर add कर ही दो, but here minus minus same sign, क्या आएगा आंसर इसका minus 6 will be the answer. Okay, so we can see yes, row wise answers are same, that is minus 6 minus 6 minus 6. So till now, yes, we can say it's a magic square. Now what we will do? Now we will check for the columns, whether the summation of column is again minus 6 or not. Okay, so quickly try and check whether we are getting minus 6 or not in the column wise also. This is our first column, this is second, this is third. So first column it is given minus 1 plus 3 minus 8. Okay, so minus 1 plus 3, again different sign, 3 minus 1 2, larger sign is of positive, so plus minus 8. Again this is a case of different signs, 8 minus 2 is 6 and larger sign is of minus, so it will be again minus 6. So yes, again अभी भी क्या आ रहा है आंसर minus 6 ही आ रहा है. ठीक है, let's try for the second column. It is given minus 9 plus minus 2 plus 5. Okay, so again same sign, 9 plus 2 11 and put the same sign only, this is minus, so minus 11 plus 5. Again this is a case of different sign, so subtract 11 minus 5 is 6 and put the value of larger number, that is minus, so again we are getting minus 6. So yes, अब तो इतना समझ आ रहा होगा कि हाँ सर ये होने वाला है. ठीक है, तो भी थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिस हो जाए रूल्स की, तो क्विकली कर लेते हैं फटाफट से. नाउ लेट्स ट्राई फॉर द थर्ड कॉलम, 4 minus 7 minus 3. Okay, so now try to solve this question. 4 plus minus 7, this is a case of different sign. Different sign कैसे, यहाँ पे plus है, this is minus, तो क्या कर दो, subtract कर दो. 7 minus 4 is 3. Now check the value of larger number sign, it is minus and plus again minus 3. Now again plus है and same sign है, तो क्या करेंगे, पहले add कर दो and same sign put कर दो, तो answer will be minus 6. So yes, column wise also क्या आ रहा है minus 6 है, तो अभी भी ये क्या है, मैजिक स्क्वायर है. Okay, now last thing that we need to check is for the diagonals, whether diagonals are same or not. So diagonals numbers are this and this. So let's quickly check whether the answer they are getting minus 6 or not. So minus 1 plus minus 2 plus minus 3. अब कैसे करेंगे इसको? Again addition sign, it is minus 1 minus 2, same sign है. 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 3. Now same sign put करेंगे, it will be minus 3, है ना. Plus again minus 3, addition sign है यहाँ पे, and again
again take the same sign. So 3 plus 3 is 6 and sign will be minus. The answer is minus 6. Okay, so last step is pending now. It is given that 4 plus minus 2 plus it is given minus 8. Okay, now plus minus it will be minus, or you can say this is the addition part. तो यहाँ पे दोनों नंबर कैसे है अपोजिट साइन, तो क्या करेंगे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 minus 2 is 2, लार्जर नंबर के साइन देखो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव तो 2 and plus minus 8. This is a case of different sign. तो अगेन क्या करो 8 minus 2 is 6 and larger than क्या है minus. So yes, whether we add row wise, whether we add column wise or diagonally, we are getting the same answer, that is minus 6, and therefore we can say it's a magic square. Okay, and again yes, हमें कुछ 3-4 चीजें करके समझ आ गई कि ये मैजिक स्क्वायर है ही, बट यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए असाइनमेंट में हमने इतनी सारी साइन कन्वेंशन एक साथ याद करेंगे कि अब एकदम हमें ग्रेड आ जाएगी, है ना, कि कब माइनस पुट करना है, कब प्लस पुट करना है, एंड कौन से ऑपरेशन में क्या ध्यान रखना है. ठीक है, सो आई थिंक दिस एग्जांपल 9 इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, नाउ लेट्स ट्राई विद द न्यू रूल. So today we will learn something about the mole mass rule. Again, this is the last concept of our chapter. Okay, so till now what we have learned, what are the number system, then what do you mean by integers, then we have learned operations on integers, then properties of integer, and then we have the word problems, and our last concept is about mole mass. Okay. Okay, so what is basically mole mass? Let's understand. ठीक है, again this is a short form, है ना, and ये कब होता है, पहले चीज जब बहुत सारे ऑपरेशंस, अगेन ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन अलग अलग पैटर्न्स भी हो सकते हैं जहाँ पे किसी नंबर पर रूट है, किसी में स्क्वायर है, 5 स्क्वायर एक्सपोनेंट पावर दे रखा हो, किसी क्वेश्चन में ना ब्रैकेट दे रखा हो कुछ नंबर्स में, है ना, तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा कि ब्रैकेट से फर्क पड़ रहा था, किसी में नहीं पड़ रहा था, तो ब्रैकेट से हम पहले सॉल्व करते हैं. तो अगेन देयर आर डिफरेंट, तो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन व्हिच देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस, है ना, क्वेश्चन दे दिया, है ना, अब सारे बहुत सारे क्या मल्टीपल ऑपरेशंस यूज हुए, है ना, अब कौन सा पहले यूज करें, क्योंकि अगर मल्टीपल ऑपरेशंस है, किसी ने पीछे से स्टार्ट किया, किसी ने स्टार्टिंग से किया, तो हर बार जरूरी नहीं है कि आंसर जो है वो कैसा आए, सेम ही है, एंड इसीलिए एक स्पेसिफिक रूल बना है जिसको हम क्या बोलेंगे, मोल मास रूल बोलेंगे. ठीक है, एंड अगेन लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस रूल, दैट इज अगेन फर्स्ट इज बी. ठीक है, सो बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, है ना, तो जब भी क्वेश्चन में अगर क्या दिख जाए आपको, ब्रैकेट दिख जाए, क्या दिख जाए इसमें आपको, ब्रैकेट दिख जाए, ठीक है, मतलब पूरा एकदम बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, एंड आउट ऑफ दैट क्वेश्चन हम क्या हो सकता है, कहीं ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, आगे आज अपनी बात बेसिक पर देख रहे हैं एक बार, ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे एडवांस में भी जाएंगे, बिकॉज ब्रैकेट भी तो बहुत सारे अलग टाइप्स हो सकते हैं, है ना, एक ही क्वेश्चन मल्टीपल ब्रैकेट में दे सकते हैं, देखो ग्राउंड होता है, उसके बाद कर्ल्स होते हैं, तो यस अगेन इसमें भी होता है, पर ये तो पहले बेसिक समझना होता है, बेसिक. तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑलवेज ब्रैकेट नंबर्स. ओके, तो B stands for brackets, then O it is given order. ऑर्डर में क्या हो गया कि जो भी पावर्स हो गए, है ना, 5 स्क्वायर हो गया, 10 का पावर 3 हो गया, तो जो भी पावर्स हो वो करेंगे, या रूट वैल्यू हो, है ना, रूट 25, रूट 49, तो वो सब अगर होगा तो हमें क्या करना है, वहाँ पे पहले इसको सॉल्व करना है.
ठीक है, आउट ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है ना, डिवीजन दिया है एंड हमें रूट 25 दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, रूट सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट इट इज गिवन d, that is division part, okay, it is given division part, ठीक है। so if any number is given division, so then we will divide it first, clear। so again तीन वर्ड में समझ आ गया, पहला हो गया ब्रैकेट साइन, पहला हो गया ब्रैकेट साइन, है ना, सेकंड हो गया ऑर्डर, ऑर्डर में क्या काउंट होगा, पावर हो सकते हैं, है ना, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, कोई भी नंबर, 15 क्यूब, है ना। देन रूट्स हो सकते हैं, रूट 95, 96 कुछ भी हो, ठीक है। देन डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ठीक है। अगेन एम जो होगा दैट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगेन बिफोर दैट ये तीन का थोड़ा सा समझते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे दिमाग में रखना है। तो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 3 + 5 - 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मल्टीपल साइंस, मल्टीपल ऑपरेशन, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवीजन भी है, ठीक है। तो नाउ इन दिस केस हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगेन क्या है, बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड में से डी पहले चेक करो क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है कहीं पे, नहीं है, चलो तो हो गया। नाउ ट्राई टू चेक वेदर कुछ एक्सपोनेंट पावर या रूट है क्या, नहीं है, चलो हो गया। नाउ लेट्स सी डी पार्ट इज डिवीजन, डिवीजन पहले दिख रहा है क्या हमें, यस दिख रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डू दिस ऑपरेशन दैट इज डिवीजन, है ना। सो 2 + 5, ओके, एज इट इज, यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दो। नाउ 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 इट विल बी क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो पता चला यहाँ पे कि अगर कुछ ऑपरेशंस, मल्टीपल ऑपरेशंस अगर दे रखे होंगे, सो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी नीड टू अप्लाई दिस रूल दैट इज बोर्ड मास रूल, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल, ओके। सो इट इज गिवन दैट 15 + 25 into 2 plus root 25. Okay, so what is the question? 15 plus 25 into 2 plus root 25. Okay, now try to solve again. This is the question of multiple operation. And here addition is also given, multiplication is also given, root again multiplication and addition is given, है ना। So now we will apply here board mass rule. B stands for bracket, check करो यहाँ bracket है क्या, okay, let's put yours, we need to understand first. So again first of all check whether bracket is given or not, yes। देखो bracket कुछ इस तरह से दे रखा होगा, कोई 2 नंबर पहले हो गया, 3 नंबर हो गया, जैसे bracket sign दे रखा होगा, है ना। So we can see here bracket sign is given, yes। So first we will solve this bracket sign numbers, then check whether another bracket is given or not, और कोई है नहीं है। So first we will solve this part, okay। तो 15 plus 25 twos up, it will be 50 plus it is root 25, okay। Now here it is root, है ना, order or you can say power that we need to solve। So 15 plus 50 plus 5, okay, our answer will be 7। So we will solve the question, but first understand what do you mean by this board mass rule, है ना। So always if there are multiple operation, first we need to solve the bracket sign numbers, then we need to solve the order or power numbers or root numbers, then we need to solve division। Now let's understand the mass part, ठीक है। So mass again it is very clear, M stands for multiplication, M stands for multiplication part, okay। So first we will check bracket, then we will check order, then we will check division, then we will check multiplication, and last to A
This is very obvious. So क्या होगा इसे? Which operation will start with A? Yes, very good. Addition. And last is subtraction. Okay, so therefore collectively, in short, we call it as a board mass rule. It's a board mass rule. Again, there are some few exception cases are there that also we will understand. But first, make sure कि हमें ये जो है बहुत से समझ आना चाहिए. क्लियर है? तो कोई भी नंबर्स जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस हो, है ना, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड मास रूल जो अप्लाई करना है. ठीक है? बिकॉज अगर पहले कुछ भी कर लिया तो आंसर डिफरेंट आ सकता है. तो ये चीज़ का हमें बहुत ही अच्छे से पता रखना है. क्लियर है? एंड अगर इम्पोर्टेंस में अगर बताऊँ, अगर मान लो पहले मैंने कर लिया 15 + 25 कितना होगा 40 इनटू क्या बचा 2 प्लस √25 is 5. now 42 is 80 80 + 5 कितना हो जाएगा 85, है ना. अगेन वापस क्वेश्चन कि बोर्ड मास इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ. कोई भी जैसा मैं समझा कि why we need properties to make the calculation easier, so why we need this board mass rule. so again imagine आप जैसे सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे. there are so many all over the world which are solving the same questions, है ना. अब किसी ने पीछे से स्टार्ट किया, किसी ने सेंटर वाला को सॉल्व किया, किसी ने स्टार्टिंग वाला किया, तो सबका आंसर तो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा. तो यूनिफॉर्मिटी तो रहेगी ही नहीं. नंबर सेम है, ऑपरेशन सेम है, बट देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. एंड फॉर दैट दिस इज अ रूल कि अगर कोई भी कहीं से भी कहीं भी अगर क्वेश्चन करेगा तो सभी का आंसर जो होगा दैट विल बी सेम. एंड फॉर दैट दिस इज आवर बोर्ड मास रूल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक रूल. कोई भी मैथमेटिक पार्ट में चले जाओ, कोई भी चले जाओ, चाहे वो ज्योमेट्री पार्ट हो, अरिथमेटिक हो, जहाँ भी कैलकुलेशन आएगा ये हर जगह एप्लीकेबल होगा. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ रहे हो. यस, इट विल हेल्प इन द 7th स्टैंडर्ड, बट फॉर द फर्दर स्टैंडर्ड आल्सो दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू अ lot. Okay, so let's try to solve few questions based on board mass. Okay. So we will start with a simple question and then we will see further advanced question also. Okay, so here it is given. 9 divided by 3 plus 8 minus. Okay, so this is our question. ठीक है. So this is again a case of multiple operations. अगर simple operation डायरेक्टली हम कर ही लेते हैं, different sign, same sign, minus minus plus, that's all. But this is a case of different sign. Now with the different sign we will apply board mass rule. Again check क्या यहाँ पे bracket sign है, numbers of bracket है, नहीं है. Second check the order, that is कहीं पे power या root है, again no. Third that is division, क्या देखो इन ऑपरेशन में डिवीजन पार्ट है ना. थर्ड D stands for division part. So check whether division part is given or not. Yes, 9 divided by 3. So first we will consider this pair of number, that is 9 divided by 3, and it will be 3. Then as it is write the other number plus 8 minus 4. Okay, now move further in that rule. We have applied the division part. Now it's mass. M stands for multiplication. So check whether multiplication operation is there or not. No. Okay, after that it's addition. Yes, addition is given, so we will add this number. So 8 plus 3, it will be 11, and this will be minus 4. Now there is single operation, we can directly perform it. So 11 minus 4, and this will be your 7. So our correct answer is 7. Okay, so this is very important rule. And it will make our calculator easier also, and सारे आंसर जो भी है वो कभी भी गलत होंगे. Clear यहाँ तक? Okay, so let's try few more questions with the help of this. Okay, so order अब पता करना board mass, ठीक है, and with the help of that we will solve some questions.
Okay, again it is given 12 divided by 6 plus 5 square plus 4 minus 6 root 49. Okay, so this is a number. So it's number एक साथ. Yes, try to solve. Okay, so again this is a case of multiple operations. So let's try. First thing, what is the rule? We need to solve the bracket sign questions. Bracket is given or not? No. Okay, चलो. After that it's order. Order में क्या आएगा? Roots और power. तो जहाँ जहाँ भी roots और power में क्वेश्चन solve करेंगे. चलो roots का है. Yes, root 49. Power, yes, it is 5 square. So first we will solve 5 square and then root 49. Okay. So other we will write as it is 12 divided by 6 plus 5 square is 25 plus 4 minus 6 again root 49. It will be plus 7. Okay, so first we will solve the order part. Now again B done, O done, now it's time for D, that is division. Check whether the division part is not here or not. Yes, 12 divided by 6. This is plus, plus, minus, plus. Okay, so 12 divided by 6, it will be 2. And write down the numbers as it is 4 minus 6 plus 7. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. Mass multiplication is not there. Then addition. Okay, so yes, we will add the numbers. Okay, so again we are solving for the first time. So we will take two numbers at a time. So 2 plus 25, it will be 27 plus 4 minus 6 plus 7. Okay, you can take again two numbers at a time. It will be 31 minus 6 plus. Okay. चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे वापस. Here it is subtraction part and here it is addition part. So what we will do, we will add this numbers first. Okay, so 31 addition तो कर रहे हैं, but this is a case of different sign, है ना? So we will subtract. 7 minus 6 is 1, and this is a case of sign of the larger number is positive. So 31 minus 1 it will be 30. Clear? Okay. Again, let's see. It will be plus 1. The answer will be 32. And minus 6 plus 7. So 7 is greater. So plus 1 should be there. 31 plus 1, it will be 30. Okay. So this is how we need to solve the question, and we need to apply the mode mass. Okay. So let's try quickly one more question based on this. It is given 25 plus 3 plus 12 divided by 6 plus 3 into 5. Okay, so this is given, and we need to find the answer of this question. Okay, so let's try. What we will do here? First, check whether bracket is given. Again, it's a mode mass. Again, if confusion हो तो ऐसे side में लिख लो. Mode mass is given. First, we will solve the bracket sign. So bracket sign is there or not? Yes. 3 into 5. So first, we will solve that number. 25 plus 3 plus 12 divided by 6 and plus 5 is 15. Okay. Now after that, there is plus plus division. Again, check order और रूट पार्ट है कि नहीं है. नहीं है. ठीक है. चलो after that division part है कि नहीं है. Yes. 12 divided by 6. Okay. So 25 plus 3 plus 2 plus 15. Okay. Now the operation is same, that is of addition. So 25 plus 3 is 28. 28 plus 2 is 30. 30 plus 15, it is here again 45.
क्लियर? सो ये रूल हमें बहुत से बता रखना है. नाउ आप लोग ट्राई करेंगे एंड ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज गिवन रूट 64 plus 5 into 3 plus 6 minus 4. This is the question. Try to apply with the board mass rule and check what will be the answer. Again, क्या सोचा? सबसे पहले क्या आएगा? Bracket. तो bracket is there? Yes. So root as it is plus, then when you 5 3s are 15. Yes. Plus 6 minus 4. Now order roots or power. So root 64 it will be 8 plus 15 plus 6 minus 4. Now again B, division part is there? No. Multiplication is there? No. Addition is there? Yes. So we will add the number first. 8 plus 15 is 23. 23 plus 6 is 29. So 29 minus 4, the answer will be 20. Is it clear? Okay, so with this हमारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं. ठीक है, एंड क्या क्या हमने पढ़ा इस चैप्टर में समझ लेते हैं, क्योंकि रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट इंटीजर्स. क्या होते हैं? इट्स अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो. देन वी हैव लर्न अबाउट ऑपरेशंस, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन. है ना? कौन से साइन कब? क्विकली याद करो. अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस तो क्या लेंगे? प्लस. प्लस माइनस तो क्या लेंगे? माइनस. ठीक है. एंड इन द एडिशन पार्ट, if the both the number are the same sign, either of addition or subtraction, तो साइन तो क्या लेंगे? सेम ही लेंगे. एंड डिफरेंट हुआ तो लार्जर नंबर क्या लेंगे? हमें साइन लेनी है. तो वो सारा लॉजिक हमने किसमें पढ़ा? अबाउट इन द प्रॉपर्टी पार्ट. ठीक है, ऑपरेशन पार्ट. देन वी लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज. तो टोटल 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है. क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी ऑपरेशन करो वो इंटीजर में रह रहा है कि नहीं. देन हमने देखा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, associative property, then identity property, and last is distributive property. These are very important properties and should be applicable on any numbers. And last we have learned the concept about board mass. Okay, so I hope with this chapter is clear to everyone. So that's all for today. Thank you so much. Happy learning.